Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav, and here we have the another episode of Deep Dive. And today we discuss about Nobel Prize 2023, and we discuss about all the winners as well. As you know that in your examination, the most of the questions, as you can see, the based on the current affairs, and the very important thing is that कि आपको इसमें जो क्वेश्चन दिखेंगे उसमें ऑस्कर नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस होते हैं. सो यू मस्ट हैव ए कीप एन आई ऑन दैट कि इसमें नोबेल प्राइज़ किस किस कंसर्न में दिया गया व्हेन इट वाज स्टार्टेड एंड ऑल. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड दिस ईयर नोबेल प्राइज़. द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन द ईयर ऑफ 1913 फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, एंड it was the literature Gitanjali. So these things that you should keep in mind, like how many Indians that who got Nobel Prize. So we'll discuss about all the winners in this list. Here is the quote: "A little progress each day adds up to big results." And here the topic is like physiology and medicine. Monday, 2nd October, that Kathleen Carico and Drew Winsons that awarded for mRNA vaccine. For physics, that announcement dated 3rd of October, that Pierre Agostini and Frederic Crosos and Annie Luzier, that electron dynamics and matter. Will only need to discuss about like the which field and awarded for what. बट आपको कभी भी ये डिस्कस नहीं करना कि mRNA का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स का क्या काम होता है, बट ओनली नीड टू थिंक्स अबाउट कि लाइक द atom made of three fundamental particles, that is electron, proton and neutron, right? Electron, proton and neutron. So in short, electron that is discovered by J.J. Thomson, proton is Rutherford and Goldstein, and neutron is James Chadwick. So for chemistry, that is for Wednesday 4th of October, that is Monge, Bavende Lewis, Bruce and Alexei Ekimov, that was awarded for the discovery of synthesis of quantum dots. Literature के लिए 5th of October को मिला award John Fosse, that is innovative plays and prose which gives voice to the unsable, and peace के लिए मिला Friday 6th October, that is Nargis Mohammadi, fight against women operation in Iran, and economics के लिए मिला Claudia को. ये हमारी नरगिस मोहम्मदी हैं. The Norwegian Nobel Committee has awarded Iranian activist Nargis Mohammadi for 2023 Nobel Prize for Peace for the fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. That according to its citation. So Nargis Mohammadi was born in 1972 in Iran, and she is currently living in detention facility there under the charge of spreading anti-state propaganda and defamation. Mohammadi and her family have long been involved in political protests, beginning with the Iranian Revolution. The monarchy fell at the end of movement in 1979, that leading to Iran becoming an Islamic republic. And Nargis Mohammadi, that her contribution and that her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. So Norwegian Global Committee had decided, and she is still in the detention center. अभी भी ये जेल में है, और उसके बाद भी इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला क्योंकि वहाँ के वुमेंस के लिए इन्होंने फ़ाइट की, राइट. सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. एंड उसके बाद हमारा नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जॉन फॉजे फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू अनसेबल. ये एक स्वीडिश अकेडमी ने ये अवार्ड दिया इनको. तो आपको बस नाम याद रखनी है, ये पूछते हैं. सो अगर आप बात करें मेडिसिन के लिए, तो नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर 2030 has been awarded to Kathleen Carico and Drew Winsons. So they have been recognized for their groundbreaking work in mRNA vaccine, which have played a crucial role in the fight against COVID-19. Their discovery have the potential to revolutionize our approach to preventing and treating infectious disease, जिसमें हमारे
पियरे अगोस्तिनी, पियरे फ्रॉस एंड ये इनको अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स के लिए। 3 इंसान को दिया गया, जिसमें इनका था एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। सो एटोसेकेंड पल्सेस जो होते हैं दैट ओपनड अप द न्यू एवेन्यू फॉर स्टडिंग द इंट्रिकेट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इनको जो अवार्ड मिला यहाँ पे, Maungi G. Bawendi, Lois V. Bruce, and Alexander I. Ikimov have been awarded the Nobel Prize in Chemistry for their groundbreaking discovery and synthesis of quantum dots. 2023 में Nobel Prize in Chemistry celebrates the remarkable achievements in unlocking the potential of quantum dots, minuscule nanoparticles whose unique properties are determined by their size. सो इन शॉर्ट ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद यहाँ पे नोबेल प्राइज़ कैटेगरी में अनाउंसमेंट जो डेट थी हमारी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन मंडे 2 अक्टूबर को, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विसन। और ये वेन्यू थी आपकी यहाँ पे सोलना। फिजिक्स के लिए यहाँ पे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम। केमिस्ट्री के लिए द अवार्ड इज़ फॉर द 4 अक्टूबर, दैट इज़ मोंगेजी वेंटी। और फॉर रिगार्डिंग ये किसको मिला है, क्वांटम डॉट्स के लिए। सो यू शुड कीप इन माइंड, कई बार आपके एग्जाम में पूछते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट द इम्पॉर्टेंट टेकअवेज दैट यू शुड नो अबाउट द इंडियंस हु गॉट नोबेल प्राइज, उनके नाम, फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, लास्ट जो मिला था हमें अभिजीत बैनर्जी इन द ईयर ऑफ 2019 इकोनॉमिक साइंस के लिए। सो इकोनॉमिक साइंसेज के लिए अवार्ड जो मिला हमारा 2019 में अभिजीत बैनर्जी को, लास्ट नोबेल रेसिपिएंट फ्रॉम इंडिया। सो ये हमारी लिस्ट है इसमें, राइट। सो यू शुड कीप इन माइंड कि इंडिया के कितने लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ अभी तक मिला, बिकॉज इन योर एग्जाम दे विल आस्क यू विच ऑफ दीज इंडियन डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930, दैट इज CV रमन फॉर द रमन इफेक्ट। सो दीज ऑल थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, ऑस्लो। बट देयर आर फ्यू न्यूज़ आर्टिकल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वाई दिस अवार्ड इज़ नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, राइट, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एबेल प्राइजेस होती हैं। एंड हियर यू शुड नो अबाउट कि यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल थी, पायनियर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। सो ये जो नोबेल प्राइज़ विनर है फ्रॉम बांग्लादेश, who show the potential of microfinance in eradicating poverty that facing more than 150 cases since the Awami League came in power in the year of 2008. So ये मोहम्मद यूनुस है, the grassroots ग्रामीण बैंक that Nobel Peace Prize 2006 से मिला था इनको, जिससे सोशल कंसाइंसेंस एंड कैपिटलिज्म के ऊपर उनका जो एफर्ट्स था दैट क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो इन बांग्लादेश। एंड at the age of 83, the bankers to the poor does down. So he assert for a world of 0 poverty, जिसमें दिया था उन्होंने 0 poverty। उसके बाद उन्होंने सेकेंड टर्म दिया था जो था हमारा 0 unemployment, and the third one is 0 carbon emission, 0 carbon emission. Now we move to the I'm sorry for the inconvenience. and यहाँ पे एक आर्टिकल थी जिसमें मेंशन की थी क्लाउडिया गोल्डस्टीन के बारे में। So when women were missing from the labor force, that was because they were home caring for children when they were paid less than men, and that why was that had lower education than men, or so said the economic orthodox। इसके लिए अभी जो हमारा 1992 में एक थ्योरी पॉपुलराइज की थी नोबेल प्राइज़ विनर गैरी बेकर ने, उसका अभी क्लाउडिया
Goldstein, that stood on the podium as the president of American Economic Association 2013 and 14 में, that argued that the answer to the solution of missing and underpaid women did not lie at home but rather in the market. So ये जो प्रोफेसर हैं गोल्डीन, इन्होंने बताया कि disadvantage is due to their inability to take on jobs that involve all consuming responsibility, parental responsibility, that make it difficult for women to take on jobs requiring long hours and irregular work schedule. प्रोफेसर गोल्डीन ने इस बात पे blame किया this inequality on the greedy work that demands extraordinary efforts from workers rewarded with high salaries, big bonuses, stock options, and fast promotion, risking income inequality that leads occupied to forego gender equality within the household and concentrate on increasing family income via specialization. And here is reshaping the environment. While increased male participation in household work and children would help, that must also find way of reshaping both the work and social environment so that they are conducive to developing a work-life balance for both men and women. अब ये हमारा क्लाउडिया गोल्डीन है, द सिविलियन रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन Sciences in memory of Alfred Nobel 2023 for having advanced our understanding of women's labor market outcomes, and this award given by the Royal Swedish Academy of Sciences. अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि वाई पीस नोबेल इज अवार्ड इन नॉर्वे एंड अदर्स इन स्वीडन. सो नोबेल प्राइज was created by the Alfred Nobel, एक 19th century के businessman थे and chemist from the Sweden. His claim to fame before the Nobel Prize was in inventing dynamite. Interestingly, Nobel decided that the Peace Prize should be awarded in Norway and all other prizes in Sweden. So Nobel historians suspect Sweden history of militarism may have been a factor behind this. So जब Nobel lifetime Sweden and Norway, that was in union, which Norwegians reluctantly joined after the Swedes invaded their country in 1814. So it's possible that Nobel thought Norway would be a more suitable location for a prize, that meant to encourage fellowship among nations. So to this day, the Nobel Peace Prize is a completely Norwegian affair, with the winner selected and announced by a Norwegian committee. और नॉर्वे की जो कैपिटल है ऑस्लो में है. दिसंबर 10 को ये जो है उनके डेथ एनिवर्सरी पे हम ये अवार्ड देते हैं, एनिवर्सरी ऑफ नोबेल्स डेथ, व्हाइल द अदर प्राइज आर प्रेजेंटेड इन स्टॉकहोम. कमेंट सेक्शन में कोई बताओ स्टॉकहोम कहाँ की कैपिटल है. So the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023, the Katalin Kariko Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside-based modification that enable the development of effective mRNA vaccine against COVID-19. The Nobel Assembly at Karolinska Institute. ये that we had already discussed. अभी इसमें देखते हैं इनमें क्या है. क्लाउडिया गोल्डीन जो है जिनको 2023 के लिए इकोनॉमिक नोबेल प्राइज मिला, रिसर्च ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप. She has studied 200 years of women's participation in the workplace, showing that despite continued economic growth, women's pay did not continuously catch up to men's, and a divide still exists despite women gaining higher level of education than men. And she explains the source of the gap and how it's changed over time and how it varies with the stages of development, and therefore there is no single policy. So Mr. Goldin analyzed that women's role in job markets and the pay she receives are not influenced just by broad social and economic changes. They also are determined partly by her individual decisions about, for example, how much education to get. And the process of evaluating prospect as times change, that helps explain why changes in labor market gender gaps has been slow. And it was started, अगर मैं बात करें इसमें, Nobel Prize in Economic Science that was established in 1968
by Swedish Riksbank, the central bank of Sweden, in the memory of Alfred Nobel. Or he was invented dynamite and founder of Nobel Prizes. So जितने भी Nobel Prize ऐसे physics, chemistry, medicine, literature and space के लिए which were established by Nobel's will, the Nobel Prize in economic science that not one of the original Nobel Prize, and the prize was established later to honor outstanding contribution to the field of economics, and the prize recognize individuals or organizations for their exceptional research, discoveries or contribution that have advanced understanding the economic and its application of real world problems. Claudia क्यों मिला? Because the pioneer work in the role of women in economy and has written several books on the topic, understanding the gender gap, economic history of American women and career and family, women's century long journey towards equity. ये सारे इन्होंने बुक पब्लिश की और उसके बाद इनको पॉपुलैरिटी मिली एंड दैट बुक वाज फॉर द वुमेन की रिसर्च के ऊपर था कि ये उनकी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वाइड इज लो, एंड जो Claudia Goldin that has provided the first comprehensive account of women that earning a labor market participation through the centuries. और उनकी जो रिसर्च है ये चीज़ रिवील करती है कि what the cause of change, the main source of remaining gender gap. और ये उन्होंने 3 बुक पब्लिश की. पहला था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन एंड द बुक पब्लिश वाज 1990. उसके बाद उन्होंने सेकेंड बुक अपनी पब्लिश की करियर एंड फैमिली के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे कैसे वुमेन के साथ मतलब एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसके बाद से कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई एंड हाउ द एंटायर वर्ल्ड वाज शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड टू वी कैन से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में. So this is all about the session, dear student, and I hope this is very important for each and everyone कि जो भी आपके पास नोट्स थे इसमें उसे आप बनाएं, बिकॉज जितने भी अवार्ड्स थे ऑस्कर के आपके हो गए, चाहे वो ऑस्कर हो चाहे आपका नोबेल प्राइज़ हो, राइट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए अवार्ड्स इन ऑनर में. सबसे पहले आपको इंडियन अवार्ड्स में देखना चाहिए भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण. उसके बाद जो आपके ऑस्कर हो गए, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गए, नोबेल प्राइज़ हो गए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो इन शॉर्ट वाई दिस अवार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ द ओनली वन रीज़न. और ये रीज़न क्या है कि बिकॉज एग्जाम में आपके अच्छी खासी क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर. सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन अ लॉट and because of my some health issues, so थोड़ी मेरे गले में खराश थी. So I hope that you manage it all. We'll meet you in the next YouTube session of daily news analysis. Till then, bye bye and take care.